Welcome to my video. Today's topic is about reading 17 and questions we will do from 18 to 22. I have covered questions from 1 to 17 in my previous video. If you want to check it that, then click on the I button or you can check it that from the description box. Now as you can see, these are the blanks and the instruction is given here that we have to write only one word. This one word makes our answer a little bit easy because if we are confused about two words, then we know that we have to choose only one word. These questions are very simple because most of the time we get our synonyms easily and we are able to find our answer. So let's see how to solve these questions. Now to solve these blanks, my strategy would be first I will read the blanks very carefully and then I will move to the passage and try to understand the passage and try to locate my answer. So let's read the blanks first. The Roman stadium of Europe have proved very versatile. The amphitheater of Arles, for example, was converted first into a dash, then into a residential area and finally into an arena. Now, जो रोमन स्टेडियम है उसको कन्वर्ट किया गया है, 3 बार इसको कन्वर्ट किया गया है. फर्स्ट बार इसको किस पे कन्वर्ट किया गया है वो हमें पता करना है. देन इसको एक रेजिडेंशियल एरिया में और फाइनली इसको एक एरिना में कन्वर्ट किया गया. हमें ये पता करना है कि फर्स्ट टाइम इसको किस पे कन्वर्ट किया गया. सो लेट्स रीड द पैसेज. द एम्फीथिएटर ऑफ आर्ल्स इन द साउथ वेस्ट फ्रांस विद द कैपेसिटी ऑफ 25,000 spectators is perhaps the best example of how versatile stadiums can be. Built by the Romans in 90 AD, it became a fortress with 4 towers after the 5th century and was then transformed into a village containing more than 200 houses. Okay, now let's see. यहाँ पे हमें दो चीज मिली है. It became a fortress with 4 towers and then it was transferred into a village. अब बहुत बार जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो विलेज को आंसर लिख देते. विलेज इज नॉट द करेक्ट आंसर. विलेज आप आंसर नहीं लिख सकते. व्हाई? बिकॉज विलेज का मतलब ही होता है रेजिडेंशियल एरिया. ये जो है ये सेकेंड टाइम इसको कन्वर्ट किया गया है, पर हमें क्या है, हमें फर्स्ट टाइम के बारे में पता करना है. दिस इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इट बिकम अ फोर्ट्रेस. अब फोर्ट्रेस का तो कईयों को मीनिंग ही नहीं क्लियर होता. दैट्स वाई उनकी ये ब्लैंक गलत हो जाती है. फोर्ट्रेस मीन्स होता है कोई मिलिट्री एरिया, कोई ऐसा एरिया जिसको आप प्रोटेक्ट कर दो ताकि उस पर अटैक ना हो. सो इट बिकम अ फोर्ट्रेस, ये आएगा इसका आंसर. Was converted first into a fortress and then into a village. Village is the synonym for the रेजिडेंशियल. नाउ जब आप रीडिंग करते हो आपकी वकाब बहुत इंप्रूव होती है बिकॉज अगर आपको फोर्ट्रेस का मीनिंग नहीं पता तो अब आपको पता चले. अगर आपको ये नहीं पता कि रेजिडेंशियल एरिया को विलेज का सिनोनिम भी ले सकते हैं तो अब आपको पता चल गया. सो डेफिनेटली ट्राई टू रीड वेरी वेल. इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके फिर रीड. ओके, लेट्स मूव अहेड. वेयर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच डैश. अब हमें जो थर्ड पे इसको हमने कन्वर्ट किया है, हमें ये पता करना है कि वहां पे स्पेक्टेटर्स क्या देख सकते हैं. Let's read ahead. It was converted back into an arena for the staging of bullfights, thereby returning the structure of its original use as a venue for the public spectators. Simple answer लिखा ही हुआ है कि जो arena है इसको convert किया गया है. क्यों? ताकि staging of bullfights, bullfights को आप देख सको. कौन देख सके? पब्लिक स्पेक्टल्स. सो जो हमारी फर्स्ट ब्लैंक थी वो थी फोर्ट्रेस एंड सेकंड ब्लैंक जो है दैट इज बुल फाइट्स. लेट्स मूव अहेड. मीनवाइल द एरिना इन वेरोना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोमन एम्फीथिएटर, इट फेमस टुडे एज अ वेन्यू where dash is performed. एम्फीथिएटर है उसको फिर से कन्वर्ट किया है, लेकिन अब वो क्या है, बहुत ही फेमस वेन्यू है, पर उस पर क्या परफॉर्म होता है. So let's read ahead. Another example is the imposing arena of Verona in northern Italy with space for 30,000 spectators, which was built 60 years before the Arthur amphitheater and 40 years before the Romans' famous Colosseum. It has endured the centuries and is currently considered one of the best prime sites for opera. ओपरा के लिए जो ये है प्राइम साइट कंसीडर की गई है. डेफिनेटली द आंसर इज ओपरा. क्यों? क्योंकि अब इसको ओपरा के लिए कंसीडर किया गया है. दैट्स व्हाई. नाउ बिकॉज वी हैव फाउंड दीज टू ब्लैंक्स इन द लास्ट पैराग्राफ, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज द नंबर सी, एंड लेट्स रीड व्हाट्स द फॉर द ब्लैंक्स.
The site of Lucas Amphitheatre has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of dash. अब जो है ये साइट है, इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया गया है, लेकिन उसमें से कोई एक पर्पस है जो स्टोरेज के लिए यूज है. वी हैव टू चेक आउट दैट. इट इज नाउ अ मार्केट स्क्वायर विद द डैश एंड होम्स इनकॉर्पोरेटेड विद द रिमेन्स ऑफ द रोमन एम्फीथिएटर. अब ये वाली जो ब्लैंक है इसको हम आफ्टरवर्ड्स अंडरस्टैंड करेंगे. लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट आंसर. द एरिया इन द सेंटर ऑफ द इटालियन टाउन ऑफ Lucca known as Piazza still Amphitheatre is another impressive example of an amphitheater becoming absorbed into a fabric of city. The site involved in a similar way of ours was progressively filled with the buildings from the Middle Ages until the 19th century. Variously used as a houses, a salt depot and a prison. अब उन्होंने ब्लैंक्स में बोला है कि जो ये साइट है इसको बहुत सारी पर्पस के लिए यूज किया गया, लेकिन हमें कौन सा पर्पस पता करना है. स्टोरेज. मेन जो है वो स्टोरेज किसकी हो रही. सो दे आर सेइंग हाउसेस, अ साल्ट डिपॉट एंड अ प्रिजन. तीन थिंग्स जो हैं दैट इज गिवन, लेकिन जो सॉल्ट है उसकी उन्होंने डिपोट की बात की है. जो सॉल्ट है वो स्टोर हो रहा है. सो डेफिनेटली द आंसर वुड बी salt. Next है it is now a market square with dash and homes incorporated into remains of the Roman amphitheater. अब जो है ये वाला प्लेस ये मार्केट स्क्वायर है विद डैश, बहुत सारी कोई चीज है, एंड होम्स, और उसमें क्या है, होम है. सो वी हैव टू चेक आउट कि होम के अलोंग हमारे पास और कौन सी चीज है जो कि ये मार्केट. इट्स बिकम अ मार्केट स्क्वायर डिजाइन्ड बाय रोमनिस्ट आर्किटेक्ट लोरेंजो Nottolini. Today the runs of the amphitheater remains embedded in the various shops and residences surrounding the public square. So shops जो है that is the correct answer, क्योंकि residential जो है वो किसका synonym है, वो है synonym हमारा home का. So what is left? The correct answer is shops. These blanks are very easy. If any problem, you can write it on the comment section. Hope this video is helpful to you. If yes, do like, share and comment. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.